why did I get married at this moment, and why it was all of a sudden? Half the people were not even aware of it that I'm getting married. How did we meet is a story that on my birthday. Is there any change in your life you're feeling? Everyone, welcome back to my channel. I'm Kiran Khokhar, back with another video for you guys. So what all changes you can see in me today? I have my hair colored, I'm wearing this whole bright suit and everything with a lot of work on it, and पूरा ऐसे कड़े बड़े पहने हैं, engagement ring वगैरह पूरा bridal feels में अब आई हुई हूँ. So yeah, today we are going to talk about a lot of marital things and a lot of stuff जो कि I'm going to share with you guys, because obviously you guys are my virtual family, so I wanted to sit here and talk to you guys about my little life update. So today's video is going to be about, I'm sure मेरा topic तो आपने पढ़ ही लिया होगा. Yes, I got married. मैंने community tab पर एक picture भी upload की थी where some of you congratulated me, and I am so happy. This is the reason I was missing for almost for whole of August from my social media, and I did not upload much content on my YouTube as well, because I was a little enjoying my me time, and थोड़ी सी ना शादी बहुत stressful भी हो जाती है. I don't know कि जो influencers ये सब social media maintain कर रहे हैं और वो शादी करके आते हैं तो कैसे maintain करते हैं, hats off to them. मुझे तो ऐसे लग रहा था कि शादी से पहले I was so exhausted, and शादी के बाद I needed at least a month का break from my life, and that is what I took. And थोड़ा सा मैं बीमार भी पड़ गई थी, plus my brother was moving abroad, so there had been too many things which has happened in a last couple of weeks. So I just wanted to give you a live update and share it with you. And also with this video, starting with this video, I am bringing up this wedding series as well. So all these things I'm going to share in my wedding series, जहाँ पर आपके पास अगर टाइम कम है या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी होने वाली वेडिंग के लिए. एंड आई विल टेल यू एंड शेयर कपल ऑफ थिंग्स विच आई हैव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माई वेडिंग टाइम, विच मेड मी very stressful, and I will share with you so that you do not have to be stressful in your wedding. So this is going to be the first segment of the wedding segment. Here I am sharing how did I get married, why did I get married, like in short time, and ऐसे एकदम से suddenly क्या हुआ, what all changes I am facing, and so on. So let's not delay any further and let's get into all these questions. सबसे ज़्यादा question मुझे here and now आता रहता था वो कि शादी कब करोगी, because I was turning 32 this year, and everybody was literally from my parents to friends was after my life, because I guess मेरे best friends के अंदर भी मैं इकलौती इंसान बची थी जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी. So why did I get married at this moment and why it was all of a sudden is because पहली तो बात, मैंने 32 में शादी क्यों की है, मैंने इसलिए की है because मुझे frankly एज कोई एक बस नंबर लगता है. I feel like आपको शादी तभी करनी चाहिए जब आप रेडी हो शादी करने के लिए. आपको शादी तब नहीं करनी चाहिए जब आपके ऊपर प्रेशर फील हो रहा है कि अच्छा ठीक है एज प्रेशर जो होता है स्पेसिफिकली कि आप 25 के हो रहे हो, 26 के हो रहे हो, आपको बाद में लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा. अगर आप इंडिपेंडेंट हो, यू आर वर्किंग गुड, यू नो व्हाट यू डिजर्व, सो आई एम श्योर आपको राइट टाइम पर सारी चीज़ें आपके लिए सेट हो जाएंगी. एंड दैट इज़ व्हाट आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ. हाउएवर येस, आई वॉज डेटिंग समबडी फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज़ द पर्सन आई हैव गॉट मैरिड टू. सो मेरे लिए थोड़ा ये बोलना ईजी भी हो जाएगा आई गेस कि ठीक है मेरे पास एक पार्टनर था, तो मेरे दिमाग में एक पूरा सेटिस्फैक्शन था कि ठीक है दिस इज द पर्सन आई एम गेटिंग मैरिड टू. बट अगर आपके पास कोई पार्टनर भी नहीं है एंड यू हैव क्रॉस्ड योर 30s, यू आर स्टिल लुकिंग फॉर समबडी, आई एम श्योर आपको अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू समबडी जस्ट बिकॉज यू आर एजिंग, do not do that. That is what I believe in. Please wait for the right person. Know what you want in a person. Know what you don't want in a person. मतलब मेरे लिए ऐसा होता है कि मेरे आपकी लिस्ट हो सकता है कि आपको क्या क्या चाहिए,
वो बहुत लिमिटेड हो, पर मेरी लिस्ट जो थी मुझे क्या क्या नहीं चाहिए उस हिसाब से मैंने अपने लिए अपना पार्टनर चूज़ किया है। एंड दैट इज़ हाउ आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, मैं अपने फ्रेंड्स को भी उसी बेसिस पे सजेस्ट करती हूँ कि आपकी लिस्ट में आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने पार्टनर में क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए हैं। एंड आई एम श्योर इट विल मेक योर लाइफ ईजियर इन चूजिंग द राइट पर्सन फॉर यू। नेक्स्ट थिंग इज कि 32 तक मैंने क्यों वेट किया। सो प्रोबेबली मे बी इफ कोविड वॉज नॉट देयर आई कुड हैव गॉट मैरिड 2 years बैक, बट फ्रैंकली शादी मेरे लिए बस एक टैगलाइन है, एक लेबल है। आई एम नॉट somebody who is very fond of a marriage concept, and neither is my now husband who was my boyfriend before. हम दोनों के ही दिमाग में मैरिज एक तरह से बस लेबल था। We were like we are fond of each other, we love each other, we like staying with each other. So ऐसा कोई हमारे पास एक प्रेशर नहीं था कि हम लोगों को शादी करके ही अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है। एंड वी वर ओके टू गेट मैरिड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड मे बी इट वॉज सपोज टू हैपन एट दिस टाइम, सो इट हैपेंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैंने इतनी जल्दी शादी क्योंकि मतलब ऑल ऑफ अ सडन इट वॉज जस्ट अ पोस्ट ऑन माई सोशल मीडिया दैट आई हैव गॉट मैरिड। आई गेस हाफ द पीपल वर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट दैट आई एम गेटिंग मैरिड। एंड मैंने कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डाले थे, मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी उससे पहले, कोई प्री वेड्स नहीं किए हैं लाइक हाउ ऑल द फैंसी थिंग्स पीपल विल do for their marriages. It was straight away I shot some stuff for my own personal memories, and मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ बैचलरेट में कुछ शेयर किया। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें की मैंने, जो कि अपनी मेमोरीज के लिए की। मैंने कोई ऐसे प्री वेडिंग के लिए फोटोग्राफर बुक नहीं किया, अपनी बैचलरेट के लिए कोई ऐसे फैंसी चीज़ें नहीं की। आई जस्ट डिड वॉट जस्ट मेड मी हैप्पी। एंड शादी इतनी लास्ट मिनट प्लान इसलिए हुई बिकॉज माई ब्रदर वॉज सपोज टू बी मूविंग टू कैनेडा, एंड हमारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम था टू प्लान आउट एवरीथिंग। सो दिस इज़ वाई ऑल ऑफ सडन वी हैड टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड बिकॉज अभी हमको पता नहीं है, लुकिंग एट द सिचुएशन, जैसे कोविड हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं, so there could have been a possibility that he wouldn't have come back this year. Families were also not willing to wait any further. Besides that, I thought it's the right moment, probably it's God's calling. Everything was falling in place one by one, so we decided let's get married and let's not wait any further. And this is how the marriage was decided for August, after a lot of back and forth. पहले वो जुलाई में होने वाली थी, जून में होने वाली थी, फिर वो अगस्त में होने वाली थी, and because of this hustle bustle, even my best friend couldn't attend my marriage, but yeah, some things have to happen, so they happen. So that is how my marriage was planned so last minute. Now the next question is ki who is my husband and blah 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 stories about him, how did we meet and stuff. So उसकी एक पिक्चर यहाँ पर डाल देते हैं। ये है सौरभ, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड एंड ही वॉज माई बॉयफ्रेंड एंड नाउ ही इज़ माई हस्बैंड। सो सौरभ जो है वो नॉन सोशल मीडिया पर्सन है, सो यू माइट नॉट फाइंड हिज इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया एनीवेयर, और यू माइट फाइंड हिम बट ही माइट नॉट बी एक्टिव. How did we meet is a story that on my birthday he was a mutual friend, and that is how we started seeing each other, we started dating each other. शॉर्ट स्टोरी में मैंने आपको बताया, इसको फालतू में एग्जैजरेट करने का कोई पॉइंट नहीं है. वी मेट ईच अदर, वी लाइक्ड ईच अदर, एंड या इट वाज अ लवली स्टोरी. प्रॉब्ली कभी मैं सौरभ को लाकर इधर बिठाऊंगी एंड देन आई विल आस्क हिम एंड यू नो प्रॉब्ली ही विल टेल यू द स्टोरी. लेट्स सी इफ ही रिमेंबर्स हाउ डिड वी मीट एंड स्टफ. सो ये शॉर्ट स्टोरी थी कि इस तरह से हम लोग मिले थे. एंड सिंस देन ऑफ कोर्स इट हैज़ बीन अ रियली लॉन्ग रिलेशनशिप. हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. देयर वर डेज वी हेटेड ईच अदर, देयर वर डेज वी हैव लव्ड ईच अदर. एंड यू नो रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि आपको काफ़ी टाइम लगता है टू फिगर आउट ईच अदर, एंड दैट इज़ वॉट वी गेव to ourselves. And probably today at this point we are somewhere जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं. So after this long we decided to get married because I guess ना उसे कोई झेल सकता है ना मुझे कोई झेल सकता है. Not like that. मुझे I guess हम लोगों ने बस ऐसे डिसाइड कर लिया कि यार ठीक है, it's been really long and you know what could be better proposition than friends turning into you know into a marital relationship. आई गेस काफ़ी ज़्यादा एक ओपननेस आ जाती है आपके अंदर. आप अगर फ्रेंड्स वाले जोन से यू नो जा रहे होते हो मैरिटल में, तो एक चिल जोन होती है. तो वो चिल जोन है मेरी सौरभ के साथ. एंड दिस इज़ वाई आई गेस आई वॉज अ लिटिल
I would say underconfident about the concept of marriage, but I was very confident that this is the person I would want to go ahead and spend my life with. And this is how Saurabh and me got married. You can see, like, I'm थोड़ा सा dressed up today for the marital things कि थोड़ा सा आपको भी लगे. Trust you me, ऐसे मैं journally नहीं dress up होती हूँ, because I'm not somebody, but मेरी थोड़ी tomboyish feel है. Otherwise I'm not somebody who would like to dress up like a newly bride that much. And yup, but once in a while for sure I would love to do it. And आज मुझे ऐसे मन था कि थोड़ा सा ड्रेसअप होके आने का, कि मैं से थोड़ा न्यू ब्राइड काइंड ऑफ फील में आऊँ. एंड आई होप मेरा काम थोड़ा सा हो गया है. एंड या दैट्स अबाउट इट. सो लेट्स टेक द क्वेश्चन. How do I feel after getting married? That was another question. Like मेरे सारे friends अभी जो मुझे पूछ रहे हैं कि how do you feel right now? What do you feel like? Is there any change in your life you're feeling? Frankly, change तो आता है. आप ये नहीं बोल सकते कि your life will remain same. Even if you're going from friends to getting married, there will still be some changes, because you don't get married to the person, as they say, you get married to the whole family. तो आपके उसमें रिलेशनशिप में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड हो जाते हैं, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस भी ऐड हो जाते हैं, फॉर्मेलिटीज ऐड हो जाती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, इवन इफ यू लाइक इट और नॉट. ऑल इन ऑल आई गेस आप मैनेज कर लेते हो. एंड इफ योर हस्बैंड इज सपोर्टिव, योर फैमिली इज सपोर्टिव, सो आई गेस you will be there. Like looking at me, I am somebody who would be too scared of people in the way कि I come from a nuclear family and Saurabh has a joint family. So मैं थोड़ा सा ना घबरा जाती हूँ when I see too many people around me. But he has been really supportive throughout this period and he understands me. He understands कि मेरे phobias कहाँ से आते हैं, and तो वो थोड़ा सा मुझे talk time दे देता है कि okay, we'll do this way and all that stuff. So he had been a very supportive husband, I should say, till now. And सब कुछ ठीक चल रहा है. Changes, I don't know, in me I would say कि as such frankly कोई खास change आया नहीं है, but थोड़ा सा अगर चेंज आया होगा तो मे बी आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कोई चेंज आया है. मेरे ख्याल से हम लोग साथ ही रहते हैं एंड वी हैड बीन लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप फॉर लास्ट 3-4 years. सो फ्रैंकली कोई खास चेंज आया ही नहीं है. इट्स जस्ट दैट no, there's no change. So let's move on to the next question. Okay, what do we do? Actually, Saurabh and me, we started long time back with our t-shirt business, and that is what Saurabh does. So we have our own manufacturing, distributing and a brand as well, which is an e-commerce brand. तो हम marketplaces पे sell करते हैं. उसके अलावा you guys know me as a YouTuber now, if I can say so, and kind of full-time Instagram content creator, let's say it that ways. So ये मेरा काम है and सौरभ का काम है, and like I told you, this is how we found each other. So the next question was, is it too late to get married at 32? Like I said before in the starting itself कि कोई एज नहीं होती है शादी की. आपको जब कंफर्टेबल हो तब आपको शादी करनी चाहिए. Provided obviously you have liberty from your families as well, because I'm sure यहाँ पे बैठकर बोलना बहुत easy पड़ जाता है, but sometimes there is lot of family pressure जिसके साथ fight करना अपने आप में एक task होती है. I have done that, so I know that. In my family, I don't think so there is any woman who has crossed 25 years without getting married. I'm the first one, and I'm glad I'm the first one, because I chose the right person, I chose the right timing, and I guess I'm in a better mental space. अगर मैं उस टाइम शादी करती तो मेरे ख्याल से जितना पेशेंस मेरे अंदर आज के टाइम पर है उतना मेरे में उस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं था. So I guess for me, I got married at the very right age. Blessed I was to have a very liberal family. अगर वो बार बार prick भी कर रहे हैं ना, so then आप उनको थोड़ा सा बोल दोगे, so they will still understand कि ठीक है, काम कर रहे हैं. At least she has a guy. So beyond a point they were not bothering me. And for Saurabh, I guess it was a bit difficult because his family was after him since a very long time. But he also managed to convince his family for the longest time that okay, let's wait more. And फिर COVID ही आ गया, तो I guess COVID helped us a lot in terms of waiting for the marriage time to be right for us.
So now the next thing is कि why Saurabh? Why did I choose him and what is so special about him? I could have picked anybody else and he could have picked anybody else. Why he chose me, we will ask him. But why I chose him, that is what I am going to answer today. So like I said कि पार्टनर की लिस्ट क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको नहीं चाहिए होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, आपको उसके बारे में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए. मुझे काफ़ी ज़्यादा थी. I had been earning I guess since I was 16-17 and I am independent. I work for myself. Whatever I have today is all by my hard work. None of it is backed by my parents. So उस वजह से मुझ में वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रीक है. आई वॉजंट लुकिंग फॉर समबडी हु जस्ट हैड लॉट ऑफ मनी एंड यू नो हु वॉज काइंड ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ शेप और फिजिक. मतलब ऐसे मेरे क्राइटेरिया नहीं थे. आई जस्ट हैड फ्यू थॉट्स इन माई माइंड कि जो मेरा लाइफ पार्टनर हो वो कुछ इस तरह से हो एंड विच इंक्लूडेड दैट ही शुड बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स मी. बेसिकली ऐसा उसके अंदर ना वो वाला मेल शॉविनिज्म काइंड ऑफ एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है. वो वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. ही शुड बी वेरी ओपन माइंडेड व्हेन इट कम्स टू लाइफ. He should not be questioning things related to space and privacy. जिसके अंदर कि आप कहाँ जा रहे हो. कुछ बॉयफ्रेंड्स होते हैं which are overly possessive and who will keep on questioning you कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो. Like you have to take basically permission from them. So that is not what Saurabh is. We had that kind of space and respect for each other. I would say one more thing which is there. Saurabh is full of patience. Sometimes it bothers, but sometimes it is really good. He has a lot of patience in him. उसके अंदर इतना patience है कि I guess I can sit and crib for the whole day, but he can still listen to me. Of course, then he is also a human being. He will also lose it sometimes, but most of the times he understands me. He understands my anxiety. He understands that where my whole pain or frustration is coming from. So these were a couple of things where I felt like he is the right person for me. We both are earning, so I guess मुझे ऐसा कोई इंसान तो चाहिए नहीं था जो कि मुझे constantly feed करे. मुझे चाहिए था जो कि मेरे साथ में चल सके, who can be my support system. I can be his support system. Who can understand me, जिसको मैं understand कर सकूँ, जो कि मेरी space को understand करे, जिसकी space को मैं understand करूँ. So एक mutual respect हो, mutual understanding हो. This is the kind of partner I was looking for, and that is what I found in Saurabh. And I guess we made a right choice for each other. मतलब I'm answering on his behalf also, but I guess it is a good phase of life with him. And of course we fight. I won't say कि हमारी कभी लड़ाइयाँ ही नहीं होती. We do have disagreements. There are days we wouldn't want to talk to each other also. We wouldn't want to see each other's face. मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा रिलेशनशिप है कि जिसके अंदर हम वॉलेटाइल चीज़ें देखते ही नहीं हैं. आपको ऐसा सोशल मीडिया वाला जो रिलेशनशिप दिखता है कि जो बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुल है ऑल डे एवरी डे. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. वी हैव आवर ओन बैड डेज, बट we have one life goal which is to stay together, to stay happy with each other. और ये हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना है जब हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, जिसके बीच में ऐसा भी टाइम था probably like I said before कि maybe I did not wish to be with him, he did not wish to be with me, but in the end I guess all is well that ends well. So that was about my life update. And I guess marriage is different when you are getting into an arranged marriage relationship, and it is different when you are in a love marriage relationship. And probably कुछ लोगों के लिए maybe वो बहुत ही similar हो. For us it is not much of a huge change, but only thing which is there is a tagline which comes with my name now, that I'm now from Miss to Mrs. Otherwise the rest everything feels the same. Everything feels really good and bright as usual. So this is a small update I wanted to give it to you guys. And ये कुछ छोटे छोटे questions थे which I wanted to address. अगर आपको कुछ और भी questions हो, I can make a part 2 of it. So make sure you put it down in the comment section. So the next video you're going to watch in this series will be how did I choose my wedding location. आप अपनी wedding location कैसे plan कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या pointers हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर हम next video बनाएंगे. So make sure you do watch that because I'm sure it is going to be really helpful for you guys. And
उसके बाद जो वीडियो है वो आएगी कि मैंने अपने आउटफिट्स कैसे चूज़ किए, आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखो अगर आपकी अभी शादी होने वाली है, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो बहुत सारी सीरीज में ऑलमोस्ट 6-7 वीडियोज़ आने वाली है, सो मेक श्योर यू डू नॉट मिस इट, डू वॉच देम, एंड दैट वाज अ लिटिल लाइफ अपडेट फ्रॉम माई साइड, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट video. Make sure you tune in, do subscribe to my channel, turn on the notification bell, otherwise you won't get to know that I'm uploading weekly videos. Besides that, these are my social media links, make sure you check them out as well. See me on my social media, and I would love to have you guys there because I upload daily content on my social media too. That was about today's video. I hope कुछ questions answer हुए होंगे. अगर कुछ questions और हैं आपके पास तो make sure you put them down in the comment section. And I love you guys a lot. Thank you for being my support system. Thank you for being the most supportive audience you can be. I'll see you in my next video. See you. Take care and bye bye.